picture is of uneven heating of land and water in winter generates winds from the northwest colder region. These colder winds carry little water, hence brings small amount of rain in winter. Now this is the winds that bring the monsoon. That means they bring the rains in the rainy season, and these are the winds that blow during the winter season, which brings some amount of rain. As in the northern part of our country during the winter season, also it rains. As in the few days, 2 or 3 days ago in Delhi and in the certain regions of UP also has received a lot of rains, and the hilly regions always receives a lot of snowfall and rainfall also both during the winter season. So the winds flow from northwest direction in the winter season, and they bring some amount of rain during the winter season also. But first we'll read this. We are not going to recite this for folk song. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. Can you list some of the problems? You can discuss and the causes and the solutions of the problem with your teachers and parents. If nature itself, there are certain situations that can cause sometimes create disasters and pose a threat to human, animals and plant life. Let us study about two such situations. One is the thunderstorm and other is the cyclone. Now, as you all know that rain, when the rain comes, we all welcome the rains, but too much of rain again is not good for us, because when too much of rain is there, it causes lot of problems. Many a times there's a lot of floods are there, and which causes havoc for the property and loss of life, animals and plants, everything. So many things are destroyed during the flood. So if it rains in a limit, it is good, but once it starts raining heavily, it is not good for any one of us. So there are certain conditions or climatic conditions happens, or situation happens that it starts raining too much. तो वो क्या दो situations हैं, उनमें से एक है thunderstorm और दूसरा है cyclone. Now we are going to study about these two. What is a thunderstorm and what is a cyclone? Now, first, this is 8.5 thunderstorm and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. Now, which are the places which are very prone to the thunderstorms are the hot and the humid tropical areas like India. हमारा इंडिया का टेम्परेचर कैसा है? हॉट और ह्यूमिड है, गर्मी भी है और बारिश भी होती है, मतलब कि मॉइस्चर भी होता है, ह्यूमिड जो भी होता है, और ऐसे प्लेसेस में जो है थंडरस्टॉर्म्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब रेगुलरली दे कम. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड rising winds. These winds carry water droplets upwards when they freeze and fall down again. So जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, the rising temperature produces the strong upward winds. As the temperature increases, the level of the amount of the air that gets heated up is quite more, so it produces a strong upward rising wind. मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है विंड जो है हवा जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है, और यही विंड अपने साथ क्या होते हैं, थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स भी कैरी करते हुए जाती है. दैट मीन्स बिकॉज द टेम्परेचर इज ह्यूमिड, सो लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर इज already present in the atmosphere. So with that hot rising air, the little bit of moisture also goes with that air upwards. Now these freeze and then they fall as droplets and then they fall down again. The swift movement of falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. Now, as the droplets start falling, the swift movement, that means the movement is very, very quick. Swift means a quick movement of the falling droplets. जैसे ये पानी गिरता है जो है ऊपर से, और बहुत स्पीड में ये सारा काम होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से ये होता है, और उसके साथ जो होती है राइजिंग एयर, जो वार्म एयर इज राइजिंग अप एंड द ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग डाउन, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग डाउन, दैट क्रिएट्स अ लाइटनिंग. उससे क्या होता है, एक लाइटनिंग जो है गर्म हवा से क्रिएट होता है लाइटनिंग, और एक साउंड निकलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द थंडर स्टॉर्म. और इससे जो है वो थंडर स्टॉर्म बनता है. गर्म हवा का ऊपर जाना और जो गर्म हवा के साथ जो मॉइस्चर ऊपर क्या है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आता है. जब दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं देन देयर इज अ लाइटनिंग एंड अ थंडर एंड देयर इज अ लाउड साउंड, दैट इज योर थंडर. इसीलिए उसका नाम, इसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. यू विल रीड मोर अबाउट द लाइटनिंग इन द हायर क्लासेस. So the more detail of the lightning you will read in the next higher levels. Now, what precautions should be taken if there is a storm?
Now, if a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. मतलब हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर storm है और lightning और thunder है तो. Do not take shelter under an isolated tree. If you are in the forest, take shelter under a small tree or do not lie on the ground. मतलब कोई भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोई भी पेड़ के नीचे आप खड़े नहीं रहेंगे, और अगर बहुत बड़ा सा आइसोलेटेड मतलब सिंगल ट्री, और कोई बहुत बड़ा सा अगर आप जंगल में हैं तो कोई भी बड़े पेड़ के नीचे आप जो है शेल्टर नहीं लेंगे. कोई छोटे से पेड़ के नीचे शेल्टर ले और कभी भी जमीन पर नहीं लेट जाएं. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड. कोई भी अम्ब्रेला जिसका एक जो हैंडल होता है उसका जो है वो अगर मेटेलिक है तो वो मत लीजिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत अट्रैक्ट करेगा. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, metal sheds are not safe place to take shelters. Now, the places where you should not sit is near a window or an open garage or storage sheds, or metal sheds are not at all safe because they attract electricity too much. A car or a bus is a safe place to take shelter. If you are in a water, get out and go inside a building. अगर आप पानी में हैं तो पानी में से बाहर आकर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है आप शेल्टर ले सकते हैं. Now we move on to the next topic. How a thunderstorm becomes a cyclone. Now we know that thunderstorm is caused by the rising hot air and the freezing droplets that fall in. But how that thunderstorm is converted into a cyclone, that we are going to study now. You know that water requires heat when it changes from the liquid to the vapor state. We all know that when we heat the water, the liquid form of the water gets converted into gaseous form, that is the vapor state, water vapor. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? Can you really recall any experience to support? अगर हमको पता है कि हीट की ज़रूरत होती है जब वाटर को लिक्विड में से वेपर बनने के लिए, लेकिन वेपर में से वापस पानी बनने के लिए क्या हीट की ज़रूरत होती है? When the water condenses, do we really need heat? No. Now, structure of a cyclone. What is the structure of a cyclone? How does a cyclone look like? हमको कैसे पता लगेगा कि ये cyclone है करके? The center of the cyclone is a calm area and it is called as the eye of the storm. Now that is why I underlined the eye of the storm. मतलब cyclone का जो center का part होता है that is very calm. मतलब वहाँ एकदम शांति होती है, वहाँ पे कोई भी movement wind का नहीं होता है, and that part is called as the center of the cyclone is called as the storm of the cyclone. A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 kilometers high. Now what is a cyclone? It is a wind. It is actually the air which rotates violently. मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से जो हवा का रोटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, and it is about 10 to 15 kilometers high. The rotation of the wind that takes place at too high speed that the height of that rotation of the wind is nearly 10 to 15 kilometers. The diameter of the eye varies from 10 to 30 kilometers. मतलब जो eye है, that means the center part of the cyclone, that diameter varies from 10 to 30 kilometers as shown in the figure 8.11. That is on the next page. You can see this. This is the figure. This is the height. At this much of height, you can see that the wind rotates like this at a high speed. And you can see here, the diameter is this. The diameter is around 10 to 30 kilometers. See, it is written here. You can see this. You can see, observe this in your textbook in a better way. Now, it is in the region of, it is a region free of clouds and has light winds. Now the diameter varies from 10 to 30 kilometers. Now at the place where the diameter, it is a region free of clouds, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बादल नहीं होते हैं और wind जो भी होती है वो भी काफ़ी light होती है. Around this calm and clear eye,
देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर्स इन साइज. जो सेंटर का पार्ट होता है वो एकदम काम होता है, लेकिन उसके आसपास का जो होता है इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर्स इन साइज इज योर क्लाउड रीजन. मतलब जो आई होती है उसके चारों तरफ बादल का बड़ा सा घेरा होता है. इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स 150 to 250 किलोमीटर्स पर आवर. और इस घेरे के अंदर जो हवा होती है, जो क्लाउड रीजन होता है, जो क्लाउड एरिया होता है आई के आसपास का, वहाँ पर जो होती है हवाएं बहुत ज़्यादा तेज होती है. उसका स्पीड इज़ नियरली between 150 to 250 kilometers per hour, and the thick clouds with heavy rains, and the clouds are very dark and thick, which brings a lot of rain. Means heavy, very heavy to very heavy rainfall is there. मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Away from this region the wind's speed gradually decreases. The formation of the cyclone is a very complex process. A model is shown now. एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द आई रीजन द विंड स्पीड जो है धीमे धीमे घटने लगती है. जो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इट इज़ अ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अ मॉडल हैज़ बीन शोन. द picture that I showed you just now on the next page is just a model of how the cyclone happens. Now, before the cloud formation, water takes up the heat from the atmosphere to change into vapor. Now, how the formation of cyclone takes place, that we'll study now. That as the cloud before the cloud formation, मतलब जब तक बादल नहीं बने होते तब तक क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की गर्मी से जो पानी है वो गर्म होकर भाप बनकर ऊपर जाता है. The water vapor changes back into liquid form as the rain drops. And how does the water come back on the earth? As it condenses in the form of clouds, and the clouds give us rain. So water comes back on the earth as the rain drops. This heat is released to the atmosphere. और ये हीट क्या कहाँ रिलीज होती है? एटमॉस्फेयर में. द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. दिस एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन द प्रेशर. और जैसे जैसे हवा फिर जो हवा हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर की, उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो धीमे धीमे गर्म होना शुरू करती है. और जैसे ही हवा गर्म होना शुरू करती है और ऊपर उठना शुरू करती है, उसके कारण क्या होता है, जो एयर प्रेशर है इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग. मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. और धीरे धीरे क्या होता है, और ज़्यादा हवा जो है सेंटर की तरफ जो है स्टॉर्म में सेंटर की तरफ जाने लगती है. दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस goes on. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds. तो धीमे धीमे क्या होता है, जैसे जैसे जो हवा है कोल्ड एयर उस तरफ रश करने लगती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, धीमे धीमे एयर प्रेशर कम होने लगता है और इससे एक लो प्रेशर जनरेट होता है विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स. लो प्रेशर, एयर का प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन जो विंड का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है when it starts revolving around, and it is the weather conditions that we call a cyclone, and this is how a cyclone develops. Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of the cyclone. Now, which are the factors that help in the formation of a cyclone is your wind speed, wind direction, temperature and humidity. All the four factors contribute a lot for a making of a cyclone. Now, next topic is 8.6 destruction caused by cyclones. Now, cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. These are the first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. Now, what are the destructions caused by the cyclones or the devastation caused by the cyclone? Cyclones are very destructive as we all know. मतलब बहुत सारा नुकसान, डिस्ट्रक्शन मीन्स बहुत सारा नुकसान करते हैं साइक्लोन्स, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो साइक्लोन की वो वाटर को पुश करती हैं शोर की तरफ. जबकि अभी भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होता है, एनर्जी होती है उस विंड के अंदर कि इफ़ इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे देन टू द वाटर स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द शोर एट अ हाई स्पीड, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि ये साइक्लोन की शुरुआत हो सकती है.
and it's so powerful that a person cannot overcome them. मतलब कि जो speed of those waves are very powerful. Now the low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. Now the low pressure in the eye मतलब the low pressure होता है air का, which is in the center of the cyclone, which is the eye, lifts the water surface from in the center. So that lifts the water, the low pressure in the center lifts the water up to upwards, and the water that rises up, it can rise up to ranging from 3 kilometers to 12 kilometers. The waves can go as high as from 3 kilometers to 12 kilometers. Now these are the figures that are shown. This is the image of the eye of the cyclone. ये जो image है वो eye cyclone के eye की है, मतलब center of the cyclone है, which this is the center of the cyclone, and the second image is the rising water caused due to cyclone. मतलब कि जो ये water level जो बढ़ रहा है, या जो rising water है, या water level जो बढ़ रहा है cyclone के कारण जो है, ये picture उसका है. Now it appears like water wall moving towards the shore. As a result, the seawater enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. So इतने ज़्यादा जब waves इतने high हो जाते हैं, 3 meters से 12 meters तक की height में हो सकते हैं waves, तो it appears, because there's a big wave of water that comes, so it appears as if it is a water wall. एक दीवार के जैसे लगती है water wall, और वो इतना ज़्यादा पानी उसके साथ अपने साथ लाती है कि जो आसपास के जो एरिया होते हैं, समुद्र के आसपास के एरिया जो होते हैं, वो पानी से, उस जो वेव्स आते हैं उस पानी से भर जाते हैं, और आसपास के जो खेत होते हैं, मतलब जो फील्ड्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो वॉश्ड अवे इन दिस वाटर. दैट इज वाई द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो लॉस्ट और इट इज रिड्यूस्ड. दैट मीन्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज फर्टाइल इज वॉश्ड अवे विद द वाटर ऑफ दिस sea waves. Continuous heavy rainfall may further worsen the situation. Along with the cyclone is always caused by accompanied by the rainfall also. And if the rainfall is also there, heavy rainfall is there, then the flood situation comes, which also worsens the situations. High speed wind accompanying a cyclone can damage houses, telephones, and other communication systems, trees, etc., causes tremendous loss of life and property. Not only the flood is caused, but also high speed winds which are accompanied by the cyclone can damage the houses. Roof जो होती छतें उड़ जाती हैं, टेलीफोन और लाइट के जो पोल्स होते हैं गिर जाते हैं, और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और इससे बहुत सारा जो है लाइफ प्रॉपर्टी को नुकसान होता है. A cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called as a hurricane in American continent. In Philippines and Japan, it is called as typhoon. Now, this cyclone, हम जिसको cyclone बोलते हैं in normal language, we call it as a cyclone in India. But the cyclone is known by some other names in certain parts of the world. Like in American continent, it is called as a hurricane, whereas in Philippines and Japan, it is called as a typhoon. Now, जो यहाँ पर जो टेलीफोन और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उखड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत बार जो लाइव वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी टूट के गिर जाते हैं. उससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाइफ को नुकसान होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर लाइव वायर है, और मैनी ऑफ द पीपल एंड एनिमल डाई बिकॉज ऑफ द करंट इन दैट वायर. नाउ, regions near the equator where cyclones form. Cyclones are worldwide phenomena. अब cyclone, it is not that only certain part of the world have the cyclone एक effect आती है या cyclones आते हैं. It is a worldwide phenomena. That means cyclones are there in every part of the world. Now you can see here, this is the places which are prone to the cyclones. ज़्यादातर जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है. Now, what are tornadoes? In our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Now, tornadoes जो हैं वो हमारे कंट्री में नहीं होते हैं, मतलब कभी कभी टॉर्नेडो आता है. It is not frequent in our country, but it is a funnel-shaped cloud. It's a dark काले रंग का एक क्लाउड जैसा होता है, जो आकाश से ऐसे गोल फनल के शेप में होता है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, गोल 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 राउंड राउंड कंटिन्यूस घूमता है, और नीचे से जो है एकदम पॉइंटेड होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है क्लाउड का फॉर्मेशन.
Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at a speed of about 300 kilometers. Tornadoes may form within the cyclones. Now tornadoes जो होते हैं ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा violent मतलब बहुत ज़्यादा strong नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत high speed tornadoes आते हैं जिनकी speed about 300 kilometers per hour भी हो सकती है, और tornadoes जो है cyclone में से भी form हो सकते हैं. Now the whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. We all know that India has a large coastal area. जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है समुद्र का किनारा लगता है, जैसे गुजरात है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ टोटली दे आर कोस्टल एरियाज. तो ईस्ट कोस्ट है स्पेशली द उड़ीसा, द एरिया विच इज़ द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है साइक्लोन्स आते हैं. द West coast of India is less vulnerable to the cyclone storms both in the terms of intensity and the frequency of the cyclones. जो west coast है that is our coast, that is जहाँ हमारा region जो है वो western region ही आता है, तो हमारे यहाँ जो western regions में है वहाँ पर cyclone की frequency भी बहुत कम है, और अगर कभी cyclone आता भी है तो the intensity of the cyclone is also not that much high as compared to the cyclones that come in the eastern part of our country. Now here the blue box is there. The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer. Now, as we heard about the tornado, what is a tornado? It's a cloud formation in the form of a funnel. It's a very, very dark cloud formation in the form of funnel which comes from the sky towards the earth. Normally जो हवा होती है, ऐसे जो गर्म हवा की वजह से जो ये storms और वो सब आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाउड से जो है वो आकाश से जमीन की तरफ आता है. ऊपर की तरफ जो आकाश की तरफ होता है, या towards the sky, it's quite broader, and as it moves down to the earth it becomes narrow. So the diameter of the tornado can be as small as 1 meter and as large as a kilometer or even wider. छोटे से छोटा जो टॉर्नेडो होता है उसका डायमीटर 1 मीटर भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. The funnel of a tornado sucks the dust, debris and everything near it at the base. Because there is so much of world in that, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी गोल 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 ऐसे घूमता है कि उसके आसपास के जितना डस्ट होता है या जो भी कचरा कूड़ा होता है वो सब उसके अंदर आ जाता है from the base due to the low pressure and throws them out near the top. और वो नीचे से जो है अंदर की तरफ एंटर करते हैं वो डस्ट और ऊपर की तरफ से सब जो है because of the low pressure that is there at the base, and then it throws out from the top. जितना भी होता है वो ऊपर से टॉप से सब dirt and everything moves out. Here are few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series. Now this you might have seen these tornadoes in the Discovery Channel में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं tornadoes. तो उसका पूरा ये एक टॉर्नेडो जिसने देखा था सर्वाइवर ने वो पूरा एक्सप्लेन करता है हाउ द टॉर्नेडो इज ऑल अबाउट. I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky and I was not hurt at all. मतलब कि जैसे ही उसको लगा कि जो है एक उसने देखा कि एक बड़ा सा बादल आ रहा है और वो शेल्टर लेने के लिए घर पे गया, जैसे उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पूरा घर जो था वो आकाश में की तरफ चला गया, मतलब ऊपर की तरफ चला गया, बट ही वॉज नॉट हर्ट, उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी. After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. We picked up splintered boards and the tree branches as well as the dead chickens with their feathers blown off, and the rabbits looked like they have been skinned. मतलब कि वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पर जो ऐसा वो हो गया था, इतना कचरा हो गया था, बहुत सारे डेड चिकन्स हो गए थे, फिर ब्रांचेस थी ट्रीज़ की, और वो सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर आ गई थी. अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड एंड अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़. टॉर्नेडो का शेल्टर लेने के लिए क्या होना चाहिए? अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़. मतलब एक ऐसे रूम में शेल्टर लेना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी खिड़की ना हो. अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ
टेबल, वर्क बेंच वेयर डर्बिस कैन नॉट रीच, मतलब ऐसी जगह पर शेल्टर लेना चाहिए जहाँ पर कि टेबल के नीचे हो, या आप सारे विंडोज़ अच्छे से लॉक कर लीजिए, या टेबल के नीचे या कोई वर्क बेंच के नीचे, और कहाँ जहाँ पर कहीं भी कचरा ना आ सके. वन हैज़ टू bow down to knee protecting head and neck यूजिंग आर्म्स. इस तरीके से बेंड होकर आप अपने आप को टोर्नेडो से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर अ बेंच और अ वर्क टेबल.